National income. So this seems to be the first topic which we should tackle in Indian economy. Uh, I've used four readings for this. One is KL Krishna in Kaushik Basu edited, I think this Oxford Companion to Indian Economics. Then other is Datan Sundaram. Um, then other is mm, yeah, A. Subramanian's article in Kaushik Basu edited Oxford Companion to Indian Economics, and the other one is Uma Kapila. Now, the point with the Indian economy is that you cannot use just one source. It does not provide it this way. But having said that, you will have to use Dattan Sundaram. That's a good book. But again, you cannot just list out only things from there. So this that is a good book to start off, but you will have to use many other things in order to supplement it. You cannot just use Dattan Sundaram. You will have to understand the chronology from there. So, what I believe is that the best way anybody has listed out the topics, even better than your syllabus, is Dattan Sundaram. You follow the logic of Dattan Sundaram, but you keep on putting in the things from here and there, right? So, after Indian economy at the eve of independence, they had something which is national income. So, national income, we will be talking about various things, but again, just doing Dattan Sundaram won't help. So, and I've used just some part of it. You also have to do it, but you have to give one reading to that point. Again, even in Uma Kapila, you cannot just use Uma Kapila, you will have to use it. You cannot just use Oxford Companion, you will have to use it. So, for Indian economy, since that is changing a lot, you will have to use different sources, right? And then you have to give the coherent picture. Don't use just one book, right? But Dattan Sundaram could be your base book, or Uma Kapila could be your base book. But I believe that the way topics are listed out, they are listed out more properly in Dattan Sundaram, because Uma Kapila is being used generally by the third year economics honor students, right? Even though you can use it, the arguments are excellent. Even the editorial notes of Uma Kapila are excellent, right? The chapters which she has written, they are excellent, right? Uh, but then again, you don't have to write the entire reading, right? You just have to pick up some points, make up your argument, and then you move on. Make up your argument and then you move on. So the point which I want to tell you is that there is no one reference. You will have to use several references here. So in the coming topics, I will also be using the EPW articles, which you will also have to use EPW articles, right? But then again, the first reading about the national income, let's say that will go from Dattan Sundaram. Then the second reading about the national income can go in the growth experience in Uma Kapila. The third reading could go from Kaushik Basu edited. So, and then you make the coherent argument which you have, right? Okay. So, see, as far as the comparisons across the time are concerned, the comparison should be on the basis of the constant prices. बिकॉज जब कांस्टेंट प्राइसेस पे देखते हो तो तुम प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से आने वाला चेंज नेशनल इनकम में वो नहीं देख रहे. तुम वो चेंज देख रहे हो जो कि क्वांटिटी के चेंज की वजह से आ रहा होगा. ऑल्सो the you have calculated the real output of each sector, you sum across all of this real output of the each sector, you get the national income. Now, in 1949, Government of India has set up the National Income Committee, right? PC Mahalanobis was the chairman, and VKRV Rao and Gadgil Sahab were the members of this committee, and they developed the estimates of the national income from 1948-49 to 1950-51, right? At both the current prices and the constant prices. So they had their methodology. We are more interested in the trends across the years. So who publishes these estimates? CSO publishes it, and
Since 1975, these estimates have been published under the title of National Account Statistics. Very introductory things, I'm just telling you that. तीन तरह के सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. So agriculture is a primary sector, industry is the secondary sector, services is the tertiary sector. एग्रीकल्चर के लिए वैल्यू एडेड अप्रोच यूज़ करी जाती है. इंडस्ट्री के लिए जो है, जैसे उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की जो सब सेक्टर्स हैं और जो अदर सब सेक्टर्स हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए वैल्यू एडेड अप्रोच यूज़ करी जाती है. हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों इंडस्ट्री के पार्ट हैं, लेकिन उसके लिए भी वैल्यू एडेड अप्रोच यूज़ करी जाती है. और जो सेक्टर्स हैं उनके लिए इनकम अप्रोच यूज़ करी जाती है. राइट. इकोनॉमी में डायरेक्ट एस्टिमेट्स और इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स भी होते हैं. सो डायरेक्ट एस्टिमेट्स आर, और व्हाट आर द डायरेक्ट एस्टिमेट्स? डायरेक्ट एस्टिमेट्स आर जो कि रेगुलरली अपडेटेड होते हैं एनुअली. राइट. इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स का रेगुलर एस्टिमेशन नहीं है, बट दे आर इनडायरेक्टली सोर्स्ड. राइट. सो पीरियोडिक बेंचमार्क सर्वेज एक्सेट्रा. जो सबसे पहला अकाउंट ऑफ द नेशनल इनकम आया था, वो मतलब जो प्रॉपर अकाउंट है, हालांकि और भी इनसे भी पहले आए हुए हैं, बट 20th सेंचुरी का सबसे बढ़िया अकाउंट अकॉर्डिंग टू के एल कृष्णा वॉज शिव सुब्रमण्यम. उन्होंने 1900 से लेकर 1946 तक का अनडिवाइडेड इंडिया का नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स दिए थे. राइट. इंक्लूडिंग द नेटिव स्टेट्स. शिव सुब्रमण्यम ने 2000 के अंदर फिर से अपडेट भी करा था अपनी रिसर्च को. दीज वर सम इंट्रोडक्टरी थिंग्स. जिस तरह का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न रहा है, अगर तुम देखो तो 1900 से 1946 तक इंडियन इकोनॉमी का जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ था वो कुछ भी नहीं था, अराउंड जस्ट 0.9%. और जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था वो और भी कम था, इट वाज ऑलमोस्ट जीरो. राइट. तो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट इकोनॉमी थी. एंड डोमिनेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं था. सो अनडिवाइडेड इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस कोई ग्रोथ नहीं थी. 0.9% वॉज द मीगर ग्रोथ विच दे हैड. इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. पर कैपिटा इनकम की तो कोई ग्रोथ ही नहीं थी. देयर वॉज नो ग्रोथ फॉर द पर कैपिटा इनकम. 1951 से 1980 के बीच में 0.9% से उठ के 3.5% तक गया, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% से 1.5% हुई. राइट. सो इन सालों के बीच में, इन ईयर्स के बीच में, 1951 से 80 के बीच में देयर वाज सम ग्रोथ व्हिच हैज हैपेंड, एंड इट वाज ऑफ कोर्स कंसिडरेबल एक्सेलरेशन. राइट. सो 1951 से 80 के बीच में द ग्रोथ वाज अराउंड 3.5% per year, and per capita income growth was only about 1.5%. Right. 1980s के अंदर फिर से एक और टर्न अराउंड आया. सो जो 30 सालों तक जो ग्रोथ थी was almost constant, and which was called the Hindu rate of growth. Right. This was called the Hindu rate of growth, and it was the low annual rate of growth before 91 reforms. Right. And it stagnated around 3.5%, while the per capita income growth it stagnated around 1.3% or 1.5%. 1980s के बाद एक फिर से टर्न अराउंड आया. राइट. एंड देयर वाज अ फर्दर एक्सेलरेशन इन ग्रोथ इन 1980s and 90s, जो 3.5% से बढ़ के 5.6% तक चली गई. और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो 30 सालों तक ऑलमोस्ट 1.5% थी, वो 1980s and 90s में बढ़ के 3.5% तक पहुंच गई. राइट. 3.5% तक पहुंच गई. सो क्वेश्चन ये उठता है कि 1980s में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 3.5 से 5.6, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ तो ऑलमोस्ट डबल थी. सो 1.5 से 3.5 तक, या 1.7 से 4 तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ऐसा क्या हो गया 1980s में that this turnaround was possible? What happened in 1980s that this turnaround was possible? Right. और ना ही सिर्फ ये इंडियन ग्रोथ वाज सिर्फ इंडियन ग्रोथ हुई है 1980s के बाद. दिस वाज मोर और लेस लाइक अ स्टेबल ग्रोथ.
right? So there was a reduction in the instability of growth. So अरविंद सुब्रमण्यन एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं करती हैं इस टर्न अराउंड को. What are those things which didn't explain this turnaround? So वो कहते हैं कि external liberalization could not be an answer, right? External liberalization could not be an answer. Why? Because the Indian trade regime, it was more or less restrictive in 1980s, right? और जो भी ट्रेड रिफॉर्म्स हुए थे 80s में, उनका जो फुल इम्पैक्ट है वो 90s में या फिर एट द एंड ऑफ द 90s में आके पता लगा था, राइट? सो जो भी ट्रेड रिफॉर्म्स 90s में हुए उसका जो मेन इम्पैक्ट है वो लेट 90s में आके पता लगा. तो जो 80s में टर्न अराउंड हो गया वो external liberalization cannot explain that. So you cannot say that due to external liberalization there was the turnaround in 80s. No, because whatever trade reforms had happened in the early 90s, its impact was felt at the end of the 90s, right? So you cannot say that that could be an explanation for the turnaround in the growth. Also, Arvind Subramanian says that there was very little internal reform which took place, right, of the product and the labor markets in 1980s. And एक चीज हुई थी, there was a de-licensing in the Indian manufacturing sector, and that happened in late 1980s. So again, it was in his word, it was too late and too little, and which cannot explain this turnaround again. राइट. सो सिर्फ इसकी वजह से इतना टर्न अराउंड हो गया ये भी नहीं हो सकता. फिर उन्होंने कहा जरा फिस्कल एक्सपेंशनिज्म को देखिए इन 1980s. So there was fiscal expansionism in 1980s, but the question arises, it was not sustainable, right? This led to the BOP crisis of 91. So this was also not sustainable. So of course it generated a growth of more than 5.8% a year, but this was not sustainable, and this led to the macroeconomic crisis of 91. So this also cannot explain the turnaround in 1980s. Then he said that what could be then the reason of this turnaround? So these are the factors which are not explaining the growth or the turnaround in 1980s. Then what was the change in the 1980s? He said that there was some kind of an attitudinal change in the government towards the businesses. जो गवर्नमेंट पहले जो मतलब अगेंस्ट खड़ी थी बिजनेस के, वो अब साथ में खड़ी थी. There was an attitudinal change, right, on the part of the government in 1980s. So it was a shift in favor of the private sector, right? और हालांकि जो भी पॉलिसीज उस समय भी हुई वो थोड़ी हैपहैजर्ड थी, ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे पॉलिसी चेंजेस हुए थे, लेकिन एटीट्यूडनल शिफ्ट था. सो उसकी वजह से इट गेव एन इम्पीटस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड इट कुड एक्सप्लेन द ग्रोथ थियरी, ग्रोथ टर्न अराउंड. और ये जो भी चेंजेस थे वो प्रो बिजनेस थे, प्रो कंपेटिटिव नहीं थे, राइट? इन चेंजेस की वजह से जो भी थे प्रो बिजनेस थे. सो वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते उनको हटाया जा रहा था, राइट? सो ये कहा जा रहा था ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही थी जो कि इंडस्ट्री में जो भी एंटर कर रहा है उसके लिए आसान हो जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए. सो इन शिफ्ट्स की वजह से, इन पॉलिसीज की वजह से, यस, इट कुड एक्सप्लेन द ग्रोथ टर्न अराउंड इन 1980s. एंड in his words, this was the essential trigger that set off the 1980s growth turnaround or the boom of 1980s. And then he also said, in his own words, he said that these small shifts elicited a large productivity response. थोड़ी changes. लोगों को लगने लगा कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, ईज कर रही है रिस्ट्रिक्शन को, अब वो उनके अगेंस्ट नहीं होगी. तो उन्होंने भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया. और वो इसलिए बढ़ाया बिकॉज अगर हम अपने पीपीएफ को देखें तो हम कहीं बहुत इनसाइड थे अपने पीपीएफ के, राइट?
So ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी बढ़ गई. There was a lot of unused capacity there, so which we started using then, and India was far away from its own income possibility frontier. So then these were the reasons why there was the growth turnaround in 1980s. Right? तो तो 1900 से 46 तक कोई ग्रोथ नहीं, 0.9%. पर कैपिटा इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं. 1951 से 1980s तक इंडिया की ग्रोथ 3.5%. पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 1.7%, 1.5%, विच इज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. 1980s में टर्न अराउंड हुआ. So in 1980s and 90s it was around 3.5%, and per capita income growth was around 1980s 90s or national income growth was around 5.6%, and the per capita income growth was around 3.5%. And then Arvind Subramaniam, he told the reasons what didn't explain the growth turnaround and what did explain the growth turnaround. Then again, here KL Krishna says, he says this, that from 2001 to 7, that was a very good period for the Indian economy, and the growth, which was around 5.6% in 1980s 90s, it went up to 7.7%, right? And this was a huge growth, right? 7.7%. And in the post-reform period, that is from 1991 to 92, 1991-92, after that period when the liberalization happened, जो भी growth आया, that was particularly because of the services revolution. Services sector की वजह से growth था, right? So 90s के अंदर अगर तुम सिर्फ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड को देखो तो जो 90s का ग्रोथ रेट था सर्विसेज सेक्टर जो ऑलमोस्ट 7.6% पर एनम पे ग्रो करा, एंड 2001 से लेके 7 के बीच में सर्विसेज सेक्टर ग्रो एट अराउंड 9%. सो ये जो भी ग्रोथ आया दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज रेवोल्यूशन, right? So, and very broadly, these are some trends in the Indian economy. Then again, if you just look at some planning period, you find this that in the initial plans, right, that is 1950 to 51 and from 60 to 60 to 61, the national income grew at around 4.2%, and the performance of the economy after that, the performance of the economy has been on decline. So पहले 10 साल तो economy grew करी थी, so maybe because of the lower base or anything, I mean it grew at around 4.2%, but then it fell, right? The growth fell substantially. That is, from 1960 to 61 to 1970 to 71, the growth was around 3.5%, and per capita income growth went further down to 1.2%. While 1970-71 to 1980-81, the national income growth was around 2.9%, and the per capita income growth fell further to 0.6%. तो इन 20 सालों में तो ग्रोथ डेफिनेटली कम हो गई, राइट? और पूरे के पूरे ग्रोथ का एवरेज लेंगे तो 3.5% आएगा. दैट इज योर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राइट? सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इनिशियल पहले 10 साल में प्लानिंग पीरियड के ग्रोथ हुआ, अगले 10 साल में ग्रोथ कम हुआ, उसके अगले 10 साल में ग्रोथ और कम हुआ, right? In 1980-81 to 1990-91, I've already told you that the growth was around 5.6% or something, right? And the per capita income growth was around 3 to 3.5%. And this was, and the economy was able to cross the barrier of the Hindu rate of growth, right? From 2004-5 to 2013-14, there was a further acceleration in growth, and the growth increased to 7.3%, and the per capita income growth increased to around 5.8%. So these are the broad distributions or broad per capita, broad trends in the national income growth. But if you look at industrial origin, right? So how did agriculture fared? How did services fared? How did this industry fared from post-independence era till now? So if you look at agriculture, its share declined substantially from 55.4% to 13.9% in 2013-14. So 50-51 में
Agriculture का share was around 55.4%. 80-81 में it declined to around 38%. In 2013-14 it declined to around 13.9%. Right? It declined to around 13.9%. So जो agriculture है उसका share कम से कम हो रहा है. That means अगर हम डेवलपमेंट की भाषा में बात करें, सो इट मीन्स दैट वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज आवर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर इज फॉलोइंग, right? Our dependence on the primary sector is falling, and we are moving in the industrialization state, that we should be moving towards where industrial sector is growing. So, and let's see about the industrial sector gave around 15% share in 1950-51, and it increased to 24% in 1980-81, 15 to 24, and it increased to just about 26.2% in 2013-14. बहुत कम इंक्रीज हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इसका बहुत बड़ा पार्ट है इंडस्ट्रीज का, वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करा है. सो एक तरीके से तो हम डेवलपमेंट की स्टेज में जा रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारा डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर इज फॉलोइंग, आवर डिपेंडेंस ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड बी इंक्रीजिंग. बट हुआ क्या है कि इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन सर्विसेज का सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले फेज को पहले ही पार कर लिया है. So we have actually bypassed the industrialization stage, and we are in the post-industrialization stage. We are in the services revolution stage. So generally देखा गया है कि जब इकोनॉमी सर्विसेज वाले रेवोल्यूशन में सर्विसेज वाली स्टेज में जाएगी, तो जहाँ पे उसका डिपेंडेंस सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सो वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगी. बट वी हैव सरपास दैट, राइट? So we have not even completed the industrialization stage. So China is moving at a right pace. So it developed the agriculture first, it developed the industries, its services is still not that developed. But we have surpassed the industrialization stage. So services sector, if you look at it, in 1950-51 it was around 29.6%. Its share increased to 38% in 1980-81. And its share increased to almost 59.9% in 2013-14. So huge dependence on services. So हम services वाले जो sector है, services के sector में पहले ही पहुंच गए हैं. We have bypassed even the industrial revolution stage. Right, sorry, not industrial revolution, industrialization stage. Then what about the public sector? Right, the share of the public sector. Again, शुरू में जब प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था, उस समय पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, it seems to be a right path, right? So if you look at 1960s and 70s, so the public sector policy was largely guided by the industrial policy resolution of 1956, right? So public sector was given a strategic importance. Public sector was given an importance that yes, you will have to take up the lead role, and you will have to take up the industrialization. So public sector is basically backed by the government, and the government has to take up the lead role for the industrialization also. And there were massive investments which were being made in the public sector that had the huge importance in the economy. Well, if you look at the public sector, how much it is contributing nowadays, it contributes around the quarter of GDP. So out of that, the administrative department gross value added is around 8.9%, 8 to 9% of GDP, right? Out of that 25%, 8 to 9% comes from the administrative department. Railways and the postal services, which are the natural monopolies, they give around 3 to 4%. And the non-departmental enterprises, right? They give around 12 to 13%. So उनका शेयर बढ़ा है. नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के शेयर को बढ़ा रही हैं? बेसिकली वो वाले फैक्टर्स, जैसे यू हैव सेट अप द न्यू इंडस्ट्रीज, देयर वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस, और इवन द बैंकिंग्स,
in banking and certain industries, there was a merger of the private electricity companies to form the state electricity boards. So all of this also led to the development of the public sector. Then, how do you explain the rural GDP, right? How is the rural GDP being is getting changed, right? So if you look at the rural GDP, share of agriculture in rural GDP, even that is falling. रूरल में भी एग्रीकल्चर का शेयर फॉल कर रहा है. So share of agriculture in rural GDP is around 39%, right? और उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो रूरल जीडीपी में आ रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन है. और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है रूरल जीडीपी में, जो कि पार्ट प्ले करता है कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट के अंदर. बहुत बहुत बड़े पोर्शन को एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल एरियाज के कंस्ट्रक्शन सेक्टर. लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वेजेस बहुत कम है, राइट? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वेजेस बहुत कम है. तो अगर गवर्नमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को डेवलप करे, देन यस देयर कुड बी इंप्रूवमेंट इन द रूरल जीडीपी ऑल्सो. The manufacturing sector in rural GDP is contributing around 18% of the output. But on the other hand, only 8% of the employment is coming in the manufacturing sector, in rural sector through the manufacturing sector. So अगर रूरल वर्कफोर्स को देखें तो वो तो बहुत कम पोर्शन जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. तो अगर हम इनको और ज़्यादा एजुकेशन दें और ज़्यादा ट्रेनिंग दें तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, राइट? तो यही लोग जो भी थोड़े से लोग जो भी एम्प्लॉयड हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. सो यू कैन इम्प्रूव एजुकेशन एंड द स्किल्स इन द रूरल एरियाज. Then you have the services sector. Services sector rural areas may be important, right? So, for example, food processing, warehousing, logistics. So we should be giving importance to these sectors in the rural areas also, because services sector is may be important in rural areas. There is a huge amount of population which is still dependent upon the services sector in the rural areas. So if you give push to certain sectors of the services in rural areas, like for example food processing, warehousing, logistics, so it will push up farmer incomes and it will provide employment to the rural areas. And then you have something which is okay, what are the different sources of growth, right? growth तो हुआ, but वो growth के sources क्या क्या है? What are the different sources? So KL Krishna says that Bosworth et al. 2007 paper, they showed that at the aggregate level, the first period, 1960 to 81, it achieved a negligible total factor productivity growth. So it was not the productivity growth, 0.2%. But in the second period, that is from 1981 to 2005, the total factor productivity growth is around 2.5%. तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का वो पार्ट जो कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज से आ रहा है, वो मेनली 1980s 81 से 2005 के बीच में आया है, राइट? सो एंड दिस अकाउंटेड फॉर मोर देन वन बाय थर्ड ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, राइट? बिकॉज जीडीपी ग्रोथ उस पीरियड में वाज अराउंड 5.6% और समथिंग. सो उसका 2% इज मेनली कमिंग फ्रॉम द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ. And again, if you look at the services sector in the second period, that is around 1981-2005, it had a very impressive growth in the total factor productivity, which is around 2.9%. So total factor productivity के increase की वजह से जो services में increase हुआ है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के वजह से जो सर्विसेज में इंक्रीज हुआ है, वो 1980-81 से 2005 के बीच में हुआ है, which was around 2.9%, which was very very impressive. And even there were impressive growths in agriculture industry, which was still better than the last period, that is 1960 to 1981. This was the point of their study, right? And then Uma Kapila talks about there were certain inter-regional disparities. So ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री ने एक साथ डेवलप, हर रीजन ने एक साथ डेवलप करा है, राइट?
सो उन्होंने कहा, सो बिफोर 1980, before 1980, the growth rate of Indian states was mediocre but relatively uniform. After 1980, fortunes of the state diverged considerably. 1980 से पहले तो जो भी ग्रोथ रेट था इंडियन स्टेट्स का वो बहुत ही मेडियोकर था, राइट। लेकिन फिर भी कुछ 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 ग्रोथ हो रहा था। एंड लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ हुआ है वो डाइवर्ज हो गया है, मतलब किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है। इसका एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि 1980 से पहले जो सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। So there was the same government which was working in center, there was the same government which was working in state. But after 1980s, the Congress, it lost its hold, right, as such. And what happened was that the state governments and the center government, they didn't match in many of the states. So because of that also you can say that yes, and of course there were the different impetus to the growth given by the different state governments after 1980s, और वैसे भी इकोनॉमी पूरी की पूरी 1980s के बाद ही ग्रो करनी चालू करी है। ऑल्सो 1990s में देखें अगर ग्रोथ को, तो जो ग्रोथ की परफॉर्मेंस है दैट वाज वेरीड, राइट। दैट इज पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए तो ग्रोथ हुई 1990s के अंदर, बट यूपी में, उड़ीसा में और बिहार में ग्रोथ गिरी। सो इन 1990s it grew, it fell, right? So और जिन 6 स्टेट्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई, राइट, वो सारी की सारी स्टेट्स किसी एक ही रीजन में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सारी की सारी स्टेट्स नॉर्थ की हैं, सारी की सारी स्टेट्स साउथ की हैं। सो द ग्रोथ वाज आल्सो वेरीड अक्रॉस। सो देयर वाज गुजरात एंड महाराष्ट्र, देयर वाज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, Madhya Pradesh and Rajasthan in the north. So this growth pattern, it was across the country. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रोथ हुआ है। केरला को अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में तो यस, आई मीन यू कैन नॉट इवन मैच ऑन दिस, बट that state is also criticized for its low economic growth, right? लेकिन if you look at the per capita income growth in Kerala, that is better. Why? Because there's low population growth in Kerala, right? Better in terms of the average of the whole country. Then Uma Kapila says that if you look at Gujarat and Maharashtra, so they were the richest states. They were also growing very fast. So ऐसा नहीं था कि कोई कॉन्शियस पॉलिसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन स्टेट्स के प्रति कि इनको ज़्यादा डेवलप करना है। चाइना में ऐसा हुआ था। There were clusters which governments, which Communist Party of China, it tried to develop those clusters, right, consciously. मतलब coastal regions, एक designated coastal regions थे, coastal zones थे जिनको develop करा गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। I mean, there was nothing as such like that. So, but हुआ क्या है, इन states ने एक conducive environment दिया है for the businesses to grow, for economy to grow, for their economy to grow. लेकिन अगर अब हम दूसरा पीरियड देखें तो एक पीरियड तो 1990s का है और एक पीरियड 2003 से 9 का है। तो 2003 से 9 के बीच में सारी स्टेट्स ने डेवलप करा, इवन जिन स्टेट्स ने पहले डेवलप नहीं करा उन्होंने भी डेवलप करा है, राइट, इवन द पुअरेस्ट स्टेट्स। फिर शी मेड अ वेरी गुड पॉइंट। उन्होंने कहा, उमा कपिला सेड अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच सेज, शी सेज कि जो बॉटम 6% स्टेट्स हैं which have around 41% of the population, right, that is 40%, 2/5 of the population of the country, they grew at an annual average of 7.1% between 2003 to 9, right? ये bottom 6 states पे this rate, अगर तुम इसको 1981 से 88 के बीच में देखो तो ये बॉटम 6 स्टेट्स का जो ग्रोथ रेट था वो सिर्फ 3.8% था, और 1988 से 2003 के बीच में देखो तो इन बॉटम 6% का जो ग्रोथ था वो सिर्फ 4% था। लेकिन 2003 से 9 के बीच में ये स्टेट्स
अराउंड 7.1% पे ग्रो करी है। बहुत अच्छी बात है। बॉटमिस्ट स्टेट्स पे भी जो ग्रोथ है वो आ गई, राइट? सो ग्रोथ एक्चुअली पेनिट्रेटेड इन all the states, right? That was a good point. Fir, there was one more point, and with that I'll end this lecture. K. Krishna says that if you compare India and China, right? India and China at 3 points: 1913, just before the World War One, 1950, around Indian independence, and 1998, towards the end of the century. How India and China they compare? So between 1913 to 50, at 1913 and at 1950 also. So India China relative in 1913 was 1.29, in 1950 it was 1.41. So India to China index is 1.29, and it further increased to 1.41. So it means India fared better than China. But in 1998, this India to China, it fell to 0.58 from 1.41. So in 1998, India fared bad as compared to China. India world relative. In 1913, India to world, it was 0.44. In 1950, India to world is 0.29. So it fell. So between these two time periods, India fared better than China, but not better than world. But when you look at 1998, then this India to world, it increased to around 0.31. So just a marginal increase, but it at least fared well as compared to the average world. But it fell considerably in terms of China, right? So these are some points in the growth experience, right? National income trends. Okay, so we talked about how the entire economy worked, how states worked, how your uh, the economy worked in the planned period, public sector worked, your I think also rural sector worked. What is the distribution of national income by the industrial origin, and what explained the growth turnaround in 1980, right? So these are the points which we discussed in this lecture. So thank you very much.